Good morning, my future chartered accountants. Good morning, Shiva, Priyanka, Ranjit, Nishi. Vidhi, Divya, Lisa Rani, Priya, Akash, Humra. Good morning, future chartered accountants. आज यार हमारे यहाँ तो बहुत सर्दी है। देखो टेबल पे भी मैं ये वो हीटर लगा के बैठा हूँ। तुम लोगों के यहाँ कैसा माहौल है? आकाश, सुधागर, हितेश, दिव्या, हिमांशु, इंतेखाब, प्रीति, परी, उड्डयन, मधु, सुधा रानी, सना, अनुज, गीता, मोहना, वैष्णवी, उत्तम, श्रद्धा, एमडी, सूर्या, शेखर, अमल, भावनेश्वरी, इशिका, पीना बेन प्रजापति, जूही, सुरेश, नैन्सी, महेश, वरुण वरुण फ्रॉम दुबई, ओके गुड, पवन, विशाल, गौतम, अखिल, रिद्धि, मोवानी, रशिका, मधु, अभिषेक, अनगा। अनगा, आई विल टेक योर प्रॉब्लम आफ्टर द ब्रेक, ठीक है ना? उसको मैं एक बार ओपन करूंगा, जो आपकी क्वेरी है लास्ट स्लाइड्स को लेकर। सुरेश, प्रियंका, गौतम, दिव्या, मृगांक, फैजल, अरे बाप रे, गुड मॉर्निंग। एक बच्चे की क्वेरी आई है मेरे पास, आप लोगों के पास सुबह ही सुबह। सर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है रिकॉर्डेड लेक्चर में, बिकॉज आई हैव अ बीकॉम एग्जाम। तो बेटा एक बार आपको लाइव में आना पड़ेगा, क्वेरी डिस्कस तभी कर पाएंगे हम, राइट? जब तक मैं ये चालू कर दूं। ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर ओपन क्यों नहीं हो रहा है बेटा? देखो आपके साइड पे कोई इशू होगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मिस्टर एमडी कह रहे हैं सर 3 दिन हो गए सूरज नहीं दिखा। हाँ यार, हमारे यहाँ 2 दिन से नहीं दिखा है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले रिवीजन, देन वी विल हैव द टेस्ट। ये क्या खुल गया? एक मिनट बच्चों, जरा मुझे क्लास सेट करनी है, एक सेकंड दे दीजिए। ओके, I have a doubt in acknowledgement or estoppel in suit by third party। देखिए, इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, चलिए अभी रिवीजन करते हैं फिर देखते हैं, है ना? सब चीज आ जाएंगी आपकी। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। कंसीडरेशन सेक्शन 2 clause D, when at the desire of promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। so consideration for doing something or maybe for not to doing something। legal rules: consideration must move at the desire of promiser, it may move from the promisee or any other person, consideration may be past, present, future, consideration should be there but need not to be adequate, consideration must be real and competent, must not be ad hoc, must be something which the promiser is not already bound to do, it must not be illegal, immoral or opposed to public policy। in the following cases a third party can sue on the contract in case of trust, in case of marriage settlement, इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट में क्या था बेसिकली, कि व्हेन समवन एक्सेप्ट द लायबिलिटी आफ्टरवर्ड्स ही कैन नॉट डिनाई। अगर आपने कोई अपने ऊपर लायबिलिटी एक्सेप्ट की है तो आप उसको बाद में डिनाई नहीं कर सकते, इवन देयर इज नो कंसिडरेशन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट।
Assignment of contracts, that is transfer of contract. Agency के केस में consideration is not required. In case of transfer immovable property, covenant running will be bound on the successor. Contract without consideration, a written and registered agreement. Written and registered agreement based on natural love and affection between near relatives, a promise to pay for a past voluntary services, that is past consideration is binding. Promise to pay time bar debt, but it should be written. No consideration required for agency. Completed gifts and bailment charity. ठीक है. पॉइंट नंबर 6 दिव्या की प्रॉब्लम है. दिव्या बेटे, पॉइंट नंबर 6 में ये कह रहा है कि अगर आप किसी चीज के लिए ऑलरेडी बाउंड है तो आप उसके लिए दोबारा कंसिडरेशन क्लेम नहीं कर सकते. इफ यू आर ऑलरेडी बाउंड फॉर सम ड्यूटी, यू कैन नॉट क्लेम द कंसिडरेशन फॉर द सेम ड्यूटी. फॉर एग्जाम्पल, a bank cashier is getting salary for doing his work, but if he charge suppose कुछ money for withdrawing the amount from the account, that is additional consideration, is cannot be claimed by the cashier. ठीक है. और कोई डाउट था? सर अंकिता इज आस्किंग, सर ऑल टॉपिक्स कवर होगा क्या? बेटे फुल एंड कंप्लीट टॉपिक्स सारे कंप्लीट होंगे. वेट करो बेटा, सब एक ही करके होंगे. हेमंत जी ने कहा है, बड़ी रिक्वेस्ट करी है हमारा जो चैनल है उस पर, सर एक बार मेरा नाम ले दो आप. क्या होगा उससे बेटा मेरे? चल, हेमंत का नाम ले दिया भाई हमने. सर मैं यहाँ हूँ, कैसे दिखूंगा? सूरज कह रहे हैं बेटा ये तो अलाउड ही नहीं है. मैं तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, केवल टेक्निकल डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है मुझे, और मेरा नोट्स दिखाई दे रहा है. मैं खुद दिखाई दे रहा हूँ उसमें, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा मुझे. आई थिंक दिव्या समझ आ गया. ओके, दिव्या का मैसेज भी आ गया. मैरिज वाले का एग्जाम्पल दे दो सर. मैरिज वाला था मैरिज सेटलमेंट. देखिए नॉर्मली क्या होता है इन केस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ सेज, if there is a partition of Hindu undivided family, the female member can claim the expenses from the karta. Karta मतलब head of the HUF, which were incurred at the time of her marriage. जितने यार गिफ्ट मिले, खर्चे किए उसने मैरिज में, वो क्लेम कर सकती है अगर HUF बाइफर्केट होती है या पार्टीशन होता है तो. चलिए. Rashika, unit 3 notes are already uploaded yesterday evening, so please once you check. Assignment of contract means transfer of contract. Suppose I assign my insurance policy to my son. Now son can claim the amount from the insurance company. इंतखाब आलम कह रहे हैं, सर मेरा डाउट है वो मैंने कर दिया कमेंट, प्लीज सर. मुझे दिखा नहीं बेटा, एक बार दोबारा भेजो प्लीज. Bailment, I have discussed with Miss Geeta Mona. I have already discussed the bailment is doing something, giving something for to someone for a specific purpose or for a specific time, and after that it will be back to you. Suppose you give your book to your friend for reading purpose, for study purpose, and after the purpose she or he will give you return the book. हिमांशु जी कह रहे हैं, सर कोई ग्रुप तो बना लो. नॉट अलाउड बेटा, हमको फैकल्टी को, BOS फैकल्टी को नॉट अलाउड. मिस्टर विशाल इज सेइंग, सर आपके साथ पढ़ाई करने में बहुत मजा आता है. आप लेक्चर लेते हो तो वो सोच आती है, एक अलग जोश आ जाता है. वेरी गुड. आना भी चाहिए. आपको CA बनना है यार, कैसी बात कर रहे हो? सबको CA बनना है, एक भी नहीं बचना चाहिए. अनिल सर मेरा नोट्स ओपन नहीं हो रहा. वेट करो बेटा, आ जाएगा. कोई ऐसा टेक्निकल आपकी पार्ट पे कहीं दिक्कत होगी, बाकी मैं एक बार टेक्निकल डिपार्टमेंट को बोल दूंगा. शगुफ्ता सेइंग, सर ओनली बेनिफिट्स कैन बी असाइंड.
or duties also. Duties can be assigned only with the permission of the transferee or promisee. जैसे for example, I have a contract with Mr. X. I have a contract with Mr. X to teach him. Right? What is his right? His right to getting knowledge from me. And what is his duty? He will pay he has to pay the fees. But he says, sir, my fees will be paid by my father or someone else, but depend upon my consent. If I'm not ready for that, duties cannot be assigned. Right? राइट सर, 2 क्लासेस मिस हो गए, प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए। बेटे मैं ऑल यूनिट 3 के अपलोड कर चुका हूँ, शायद शो नहीं हो रहेंगे, मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट को बोल दूंगा तो क्लास के बाद आ जाएंगे। ठीक है, अभी आपको देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्रिपेयर द शीट। तो टुडेज गेस्ट इज छोटा भीम। वेलकम हिम। The term consideration in legal term is defined in section 2, clause A, clause B, clause C, clause D. जो अभी क्वेरी बची है मैं लेता हूं इस सेशन के बाद। सेशन मतलब ये जो टेस्ट वाला अपना सेशन है उसके बाद। तो ठीक है, द आंसर इज सेक्शन 2, क्लॉज डी। नेक्स्ट, which of the following statement are correct? Consideration may be past, present, or future. Consideration may be either positive or negative. Consideration must move at the desire of promiser. Consideration must be furnished by the promisee himself. कौन कौन से सही है इसमें ये आपको बताना है बच्चे। The answer is D. 1, 2, 3 are correct. 4 is not correct because consideration must not be, may be furnished by promisee himself or some other person. ठीक है बेटे, you need not to send me the answers. The forbearances to sue is regarded as invalid consideration, no consideration, valid consideration, none of these. Forbearances. It is valid consideration. Next question. Of A found B's purse and gave it to him. B promised to give rupees 500 to A as reward. In this case, B's promise. There is past consideration, present consideration, future consideration, no consideration. This is past consideration.
An agreement without consideration between the parties who are in near relationship to each other is valid and enforceable if agreement is in writing, registered, based on natural love and affection, all of these. The answer is B, all of these. For the enforcement of promise to pay a time-bar debt without consideration, which of the following is not required? Not required. It must be in writing. It must be definite and express. It must be signed by the promisor. It must be registered in a court of law, which is not required. The answer is D, because this is the only condition which is not required for the for the contract to pay the time bar debt. It must be registered. As per the rule of privity of contract, a stranger to contract cannot sue. A stranger to consideration cannot sue. A stranger to contract can sue. None of the above. The answer is A. A stranger to contract cannot sue. Must move at the desire of promisor. Offer, acceptance, consideration, obligation. It is consideration. Very easy question. There can be a stranger to consideration, cannot be a stranger to consideration, must be a stranger to consideration, must always be a stranger to consideration. Can be. Answer is A. Maybe. No consideration, no contract does not apply to completed gifts. True, partly true, false, none of the above. It is true. So I'm taking your queries. One is, sir, agency. Ye Pavitra is asking. Sir, agency without consideration is void. No, in agency, there need not to be consideration. It means a agency may be without consideration. परी इज आस्किंग सर बेलमेंट का मतलब बोली लगाना है क्या? नहीं बेटे, बेलमेंट का मतलब होता है कोई चीज किसी को देना। जैसे आपने अपने दोस्त को किताब दी पढ़ने के लिए और पढ़ के वो वापस कर देगा, रखेगा नहीं, वापस कर देगा, इसे बेलमेंट बोलते हैं। ठीक है। अनुषा सिंह इज सेइंग सर बिकॉज सर ने बनाया है। व्हाट इज, किस बात की बात कर रहे हैं बेटा, प्लीज मुझे बताना। अनुषा, समझ नहीं पाया मैं आपकी बात। मिस्टर राजेश कुमार, मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर मींस, प्रॉमिस नहीं है बेटे, मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर है। मतलब जिसके, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फिर मिस्टर एक्स टू टीच हिम, so my consideration, for me the consideration is fees, so that must be according to me, my opinion। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कोई डिसाइड कर सकते हैं या मिस्टर एक्स कोई और चीज डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। सर प्लीज शेयर योर सीए जर्नी। ओके, आई विल शेयर, बट whenever time allows me। Surya sir, you teach very well, thank you। Sir, Nancy is asking, sir, please explain consideration need not be adequate. I always told you, in fact, in the last lecture, I have discussed with you that there must be consideration, but it need not be equal to the value. Suppose I sell my mobile phone just for 1000 rupees. It's my free consent, मुझे कोई दबाव नहीं है, मैं 1000 में बेच सकता हूँ, that is valid contract। दिव्या सिंह, सर मुझे लॉ पसंद नहीं था, आपने इसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बना दिया। थैंक यू बच्चे, लॉ तो सभी का फेवरेट होता है यार।
इशिका सेइंग सर पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है या वॉइड? वैलिड है बेटा, ये तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इंतकाब इज सेइंग सर बीकॉम का एग्जाम चल रहा है इसलिए मैं आपका रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूँ बट मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैं आज लाइव ज्वाइन कर रहा हूँ, प्लीज कुछ बढ़िया अप्रोच बता दो। बेटे आप बस रिवीजन करिए, उनको पढ़िए, पढ़ते पढ़ते अब क्लियर होना शुरू हो जाएगा लॉ। और क्वेरीज आप मुझसे पूछते रहिए, ठीक है ना। रिकॉर्डेड शो नहीं कर रहा है बेटा, एक बार देखो हो रहा होगा यार, भैया उस पे एक बार मैसेज डाल दो, हो रहा होगा डेफिनेटली। मैरिज सेटलमेंट मैंने समझा दिया बेटे। आंसर सेंड नहीं करने हैं बच्चों। इंतकाब मैंने बता दिया, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी बेटा। फर्निश मीनिंग सर, फर्निश में सबमिट करना, ठीक है। सर सू का मीनिंग क्या होता है? सू का मतलब सूट फाइल करना, किसी के ऊपर केस फाइल करना। फॉरबियरेंस से किसी रोकना, किसी काम करने से रोकना। मैरिज सेटलमेंट सुधीर आई हैव डिस्कस बेटा विद यू, अभी डिस्कस किया है सुधीर, आप बार बार क्वेरी कर रहे हो। बताया मैंने कि मैरिज सेटलमेंट का एक कंसेप्ट ये है कि अगर हिंदू एच यू एफ में, हिंदू अनडिवाइड फैमिली में फीमेल मेंबर, अगर हिंदू अनडिवाइड फैमिली पार्टीशन होता है तो वो अपने मैरिज में जो गिफ्ट मिले, जो खर्चे, वो क्लेम कर सकती है। एक ने मुझे रेटिंग दिया स्टार स्टार, बहुत सारे स्टार दिए हैं, हिमांशु थैंक यू सो मच बच्चे के। चलो, दिव्या कह रही है सर मैंने पिछली क्लास मिस कर दी, कोई बात नहीं, आज दोबारा पढ़ लेना बेटे। सर रिवोकेशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, देखिए टेलीफोन पे अगर कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर रहे हैं, जिस समय बता रहे हैं वही खत्म हो जाएगा, और जिस प्लेस पे वो रिसीव कर रहा है फोन, तो वो प्लेस ऑफ रिवोकेशन कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। हाउ कंसिडरेशन मे बी पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव मीन्स टू डू समथिंग, नेगेटिव नॉट टू डू समथिंग। आई विल गिव यू रुपीज 100 रुपीज इफ यू डोंट फाइल द सूट अगेंस्ट मी, तो आप कुछ नहीं करने के लिए कंसिडरेशन हो सकता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज की यूनिट नंबर 3। other essential elements of contract. So this unit will take 2 lectures. Some part will be done today and some part in the next class on Tuesday, right? Other essential elements of valid contract में क्या क्या covered है इस unit में? Capacity to contract, free consent, lawful consideration and object, contract not expressly declared void. In capacity to contract, we will discuss major, sound mind, and not disqualified for entering into the contract. In free consent, we will discuss coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Today, we will discuss, for today's lecture, we will discuss capacity to contract and 2 points, coercion and undue influence in free consent. Rest will be discussed in the next lecture. ठीक है? तो फर्स्ट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसका मेन मीनिंग है द पर्सन हु आर कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ पर्सन इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अगर कौन कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये लॉ ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। अगर कोई और पर्सन अदर देन दीस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा, वहीं उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। So as per the law, the capacity means competence of parties to make a contract. Whether party is capable to enter into contract or not will be discussed in this concept. Concept. Who is competent? Who is competent? According to section number 11 of Indian Contract Act 1872, every person who has attained the age of majority is of sound mind, is not disqualified from contracting, is competent to contract. प्लीज रीड कीजिए इसे एक बार बच्चों।
According to section 11, who is capable? Major, sound mind and not otherwise disqualified from contract by law. मतलब मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और किसी और वजह से उसको डिस्क्वालीफाई ना किया हो किसी लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. अगर हम इसको एनालिसिस करें, if we go for analysis of this section, we find that following persons are not competent, are incompetent to contract: minor, person of unsound mind, and person disqualified by law of which they are subject. It means they are disqualified. He is the person, he is not minor. It means he is major, he is sound mind. But law specifically disqualified them. किसी और रीजन से, वो विल डिस्कस करेंगे, इस वजह से वो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता. यानी कि माइनर कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, या वो पर्सन जिसे लॉ ने स्पेसिफिक डिस्क्वालीफाई किया हो. ना तो वो माइनर है, ना वो अनसाउंड माइंड है, पर लॉ ने स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई किया होगा तो वो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ ऑफ व्हिच दे आर सब्जेक्ट. राइट. डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हो. बेटा डिस्कस करेंगे अभी इसको, रुक जाइए, है ना. So first is minor. Who is minor? So as per the Indian Majority Act, Act 9th of 1875, a minor is a person who has not completed the 18 years of age. जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है वो क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा. अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो माइनर मीन्स चाइल्ड, किड. दीज आर द माइनर्स. सो क्यूट, कितने अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल आप लोगों की तरह से, जैसे आप लोग हैं प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से, ऐसे ये बच्चे हैं माइनर. तो माइनर क्या है? वाई माइनर इज डिस्क्वालीफाइड? देखिए मुझे समझ में आता है माइनर कौन है. बच्चा. बच्चा कौन है? भगवान का रूप. और भगवान के संग कॉन्टेक्ट करोगे तो वॉइड ही है. कैसे क्लेम कर सकते हो? भगवान को सब राइट, सब राइट, लेकिन आप उनसे क्लेम नहीं कर सकते, आप सूट फाइल नहीं कर सकते. हु इज माइनर? The minor, the person who has not attained the age of 18 years. So what are the legal rule, position of contract with minor? Position of contract with minor. First is a contract made with or by minor is void ab initio. Please underline void ab initio. कर लीजिए वरना थोड़ी देर बाद फिर पूछेंगे आप मुझसे इसका मतलब क्या है. Void ab initio. It means void from beginning. Initio means beginning. Void ab initio. Void from the beginning. A minor is not competent to contract and any agreement with or by minor is void from the very beginning. Minor के संग कॉन्ट्रैक्ट करा होते ही void हो गया. ठीक है. See the example. This is the very famous case of Mohari Bibi versus Dharamdas Ghosh. What was the case? Mr. D, a minor, mortgage, D means Dharamdas. Mr. D, a minor, mortgage his house for 20,000 to money lender, but the mortgagee, that is money lender, has paid rupees 8,000 and tell him that she will give 12,000 tomorrow. Subsequently, the minor had filed a suit for cancellation of the contract, held the contract is void as Mr. D is minor and therefore he is not liable to pay anything to the lender. So this is the just in summary. I just discuss in the detail what was the case. Case was that a minor of Mr. Dharamdas Ghosh reached to the Mahajan, money lender. Money lender कौन? मोहरी बीबी. For taking the loan of 20,000 and he mortgaged the property papers with her for 20,000. And Mori Baby asked him that she will give 8,000 today and rest 12,000 in the next year.
Okay, but next day Dharamdas Ghosh filed the case in the court that the contract entered by him with the Mori Bibi is void, so the papers of the property should be given back to him. क्या केस बताया मैंने आपको कि बच्चा था 17 साल का, माइनर हो गया, वो मोहरी बीबी जो मनी लेंडर थी उस गांव की, उसके पास गया और अपनी जमीन के पेपर, अपने घर प्रॉपर्टी के पेपर उनके पास रख दिए कि इसके अगेंस्ट मुझे 20,000 रुपए का लोन दे दो। मोहरी बीबी ने उसे 8,000 का लोन दिया और कहा 12,000 मैं कल दूंगी आपको, आप अभी 8,000 ले जाओ। अगले दिन धर्मदास ने केस कोर्ट में फाइल कर दिया, क्या कह के कि भैया मैं तो माइनर हूं, मेरे संग जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वॉइड है, इसलिए मेरे पेपर वापस दिलाए। दिस वाज, बट द इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट वाज डन दैट in that case, court said okay, the contract is void, so Mohari Bibi must return the papers of property to Mr. Dharamdas. Okay, now Mohari Bibi claimed rupees 8,000 from Dharamdas. Dharamdas told, sir, I don't have any money, I spent all it. मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। मोहरी बीबी ने कहा अच्छा भैया हम कागज वापस कर रहे हैं, आप ले जाओ, लेकिन जो हमने कल 8,000 रुपए दिए थे वो तो वापस कर दो। धर्मदास ने कहा मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, वो मैंने खर्च कर दिए। क्वेश्चन arises whether Dharamdas is liable for that. The court said no. Minor is not liable if he has no asset. अगर माइनर पर पैसे नहीं है तो वापस करने के लिए वो लायबिल नहीं है। दिस वाज द ब्यूटी ऑफ द केस कि भैया माइनर के संग करोगे तो अपने रिस्क पे काम करोगे। If you entering into contract at your own risk, court law will not be helpful in this case. एक बार दोबारा पढ़िए केस को। जब तक मैं आपकी क्वेरी ले रहा हूं बच्चे, Preeti is asking, sir, if A makes a proposal to B to sell his car for rupees 2 lakhs and B, without knowing the proposal of A, it is not an acceptance as B was not aware of the proposal made by A. It is only cross proposal. It is void contract. Yes. देखिए अगर दो कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम पर हो रहे हैं सेम टाइम पर तो वो क्रॉस ऑफर हो जाएंगे और वो वॉइड हो जाएंगे। ठीक है सर, एक्सप्लेन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट कंसिडरेशन इज वॉइड। नहीं नहीं, प्रेजेंट देखिए कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट ये डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। सर ये सेक्शन 10 के अंदर था तो एसेंशियल कैसे हुआ? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू वांट टू आस्क दिव्या, थोड़ा समझाओ क्या पूछना चाह रही हैं आप मुझसे। Allu Raju is saying, Allu Raju is saying, sir, I have experienced all of law in real life. Okay, that's good. Now I can understand very well and facing some difficulty to understand book language. देखिए, if you are देखिए दो चीजें हैं book to understand the language of book. First you read once again, and second is you should go for the my notes. ठीक है, आप मेरे नोट्स से पढ़िए, इससे क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट। हेमराज इज सेइंग, सर हम ओनली आपके नोट से याद करें, ठीक है, पर बुक शुड भी एक बार रेफर तो करनी है बुक्स आपको। हालांकि मेरे नोट्स बुक से ही है, मैंने कोई एडिशनल चीज नहीं दी है। आकांक्षा सेइंग, सर प्रॉपर्टी से तो 8,000 लिए जा सकते हैं, अगर 8,000 रुपए है उसकी प्रॉपर्टी के पास, उसके पास 8,000 रुपए हैं तो ही लिए सकते हैं, अगर नहीं है उसके पास अपने पर्सनल तो क्लेम नहीं कर सकते कि बाद में देना पड़ेगा, तो नहीं खत्म। बेटे ये तो दिव्या कहना ये है कि सर ये तो 10 सेक्शन 10 में था, तो अदर एसेंशियल क्या हुआ? अदर एसेंशियल मतलब है कि हमने जो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके अलावा क्या क्या बचा है वो थर्ड चैप्टर में है।
दो चैप्टर में जो हम डिस्कस कर चुके हैं एसेंशियल, उसके अलावा जो बचा वो थर्ड चैप्टर में है, इसलिए हमने इसको अदर नाम दिया. If minor has asset, then he is liable to pay. We will discuss on today. दिव्या, अब क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? सर आई एम वेरी प्राउड माई सेल्फ डूइंग कोर्स लाइक सीए. ओके, पता है सीए इज द, मतलब आई थिंक इससे बड़ा कॉमर्स में कोई कोर्स नहीं है, ऐसी बड़ी कोई डिग्री नहीं है मेरे हिसाब से कॉमर्स में. कितना भी बड़ा आदमी हो, सीए साहब के साथ सीए, आप जब सीए बन जाएंगे सीए साहब ही कहलाएंगे, वो आपको सीए साहब करके ही बोलेगा वो. देखिए सेक्शन, उड्डयन कुमार इस कह रहे हैं सर नो कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 25 इज वैलिड. देखिए सेक्शन 25 सेज द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट देयर आर एक्सेप्शन, 7 exceptions आर देयर. बस पढ़ लीजिए बच्चों. void ab initio means void from very beginning. I have discussed बच्चे. विलन Velantina Velak Lakshmi. EG means Mr. D need not to pay. Mr. D need not to pay. Uh, do need not have to pay back 8,000. Yes, D need not to pay 8,000 if he has no money about it. Then you start, if he expended all the money, he need not to return the money. चलिए आगे बढ़ते हैं. No ratification. Please underline ratification. Ratification means confirmation. Please note down. Ratification means confirmation. Ratification means confirmation. A minor cannot confirm the agreement on attaining majority as the original agreement is void ab initio. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर माइनर ने, if the contract is entered during the time of minority, cannot be confirmed even after becoming major. अगर जब आपने माइनॉरिटी के टाइम पर भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे आप बाद में कंफर्म नहीं कर सकते मेजर बनने के बाद भी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट यू वर द माइनर एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम void एट दैट टाइम ओनली. तो void contract cannot be converted into valid, right? So example 2 says X, a minor makes a promissory note in the name of Y. On attaining majority, he makes a new promissory note in place of old one. Here, the new promissory note which he executed after attaining majority is also void because being without consideration. Suppose uh, X has taken some money from Y. X has purchased some goods from Y, and at the time of his minority, and he makes a promissory note at the time of his minority, the contract is void in itself. After becoming major, X writes a new promissory note, but this time a new contract is there. X is giving the promissory note, but what he is getting in return, the contract will be void. क्या है एग्जाम्पल में कि X माइनर का कोई लायबिलिटी थी, उसके ऊपर Y से उसने कुछ खरीदा हुआ था मान लीजिए, और उसने promissory note साइन करा माइनॉरिटी के टाइम पर, कॉन्ट्रैक्ट void हो गया, क्लेम नहीं कर सकता. अब वो जो मेजर हो गया उसने कहा ठीक है जो मैंने माइनॉरिटी टाइम में उसका पेमेंट कर रहा हूँ, द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड. क्यों? क्योंकि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट जब माइनर था वो खत्म हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट void हो गया. अब मेजॉरिटी के टाइम पर वो चेक दे रहा है उसे, या प्रॉमिसरी नोट दे रहा है, then क्या होगा? ये क्या होगा? Contract without confirmation. And hence it will be void. Third point, minor can be beneficiary or can take benefit out of the contract. In simple language, this is what it says. Minor has no liability. Minor can reclaim benefits, but not liable for it. Minor benefit तो take कर सकता है, total liability नहीं है. Though minor is not contributed to contract, nothing to the contract event from something, the other party bound by. Other party bound by. देखिए माइनर को
राइट पूरे हैं, लायबिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्लियर कर देगा आपको। A promissory note duly executed in favor of minor is not void. In favor of minor. In example number 2, minor is making the promissory note. But in this example, promissory note was in favor of minor. Minor has right to claim, is not void, and can be sued upon by him because he, though incompetent to contract, may yet accept it. अब माइनर ये तो रुकते हैं। क्या था एग्जाम्पल नंबर 2 में, क्या था बच्चे? माइनर लिख रहा था प्रोमिसरी नोट, अपने आप को लायबल बना रहा था, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि प्रोमिसरी नोट किसके फेवर में लिखा गया? माइनर के फेवर में। माइनर को राइट है क्लेम करने का, इट इज वैलिड। अगेन अ माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज as the contract with minor is void, he cannot be a partner in the partnership firm. But Section 30 of Indian Partnership Act 1932 provides a partner, a minor can be admitted in the benefits of partnership with the consent of all other partners. सेक्शन 30 प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप एक्ट का कि हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैं तो मेंशन ही नहीं है कि पार्टनर हो सकता है माइनर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ वॉइड होता है। लेकिन सेक्शन 30 जो स्पेसिफिक एक्ट है पार्टनरशिप का, वो ये कहता है कि सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग एक माइनर बेनिफिट के लिए पार्टनर हो सकता है फर्म में, अगर बाकी सारे पार्टनर इस बात के लिए राइट। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। इससे पहले क्वेरीज आप लोगों की? सर व्हाट इज मीन बाय सेक्शन 10? नो, दिस इज नॉट ए राइट क्वेश्चन। ये तो बच्चे आपको लेक्चर देखो, आपने लेक्चर देखा ही नहीं, इसका मतलब मेरा पहला एक भी लेक्चर, तब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। फर्स्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज सेक्शन 10। सर इंग्लिश ग्रामेटिकल में प्रॉब्लम है तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आगे भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी जीवन में। अभी तो आपकी एज माइनर के आसपास ही होगी, माइनॉरिटी के आसपास ही होगी, अभी तो बहुत जीना है आपको, तो थोड़ा सा चेंज करिए अपने आप को। सम विनू जी मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है, सब मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, ऐसा है क्या? टेक्निकल सपोर्ट में विनू जी, कुड यू हियर मी? बच्चों एक मिनट रुकिए, मैं टेक्निकल डिपार्ट सपोर्ट से डिस्कस कर रहा हूँ। विनू जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? ओके ओके बेटा, मैं देख रहा हूँ वॉइस के लिए आप लोगों की क्वेरी आ रही है। अभी सही आ रही है मेरी आवाज? फिर दोबारा दोबारा रिपीट करता हूँ। ओके, अब मेरे को आप लोगों से आ रहा है, जवाब आया है कि अब सही है, तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ बेटा पॉइंट नंबर 3 को एक बार। हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। ओके, थर्ड पॉइंट,
minor can be beneficiary or can take benefit out of the contract. What this point says? This point says minor has only rights, no liability. Minor के पास सारे अधिकार हैं, कोई liability नहीं है. See the example number 3. A promissory note duly executed in favor of minor is not void. अगर promissory note किसके फेवर, माइनर को राइट है तो वो वैलिड है, राइट. माइनर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं हो सकती. एंड नेक्स्ट पॉइंट कहता है माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म. दिस प्रोविजन आर गिवन इन द as per Indian Contract Act, because as per Indian Contract Act, a contract with minor is void ab initio. So minor cannot be a partner. But the specific law on this partnership, that is Indian Partnership Act 1932, Section 30 provides that a minor can be admitted in the partnership. A minor can be admitted in the partnership for benefits only with the consent of all the partners. Right? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ मुझे इस पॉइंट पर, जब तो मैं क्वेरी ले रहा हूं आप लोगों की. मिस पद्मा चरिता saying, sir, if essential elements of a valid contract is given in the exam, so we have to write both essential given under section 10 and element that are not given by section 10. Yes. She is asking, sir, if question is given in such a way, write down the essential elements of of a contract. So you have to mention all the essential elements. Sir, it's minor is take only profit, but he is not liable for any loss or liabilities. Yes. Sir, if any class missed by me, then the next class will be understandable. Definitely yes, but the benefit तो उसी को मिलेगा जो आपने पहले से रिवीजन किया होगा या जो क्लास आपने देखी होगी. ठीक है. अभी साउंड ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या था? एग्जाम्पल नंबर 2 में माइनर इज लाइबल, ही इज मेकिंग द प्रोमिसरी नोट, बट इन एग्जाम्पल नंबर 3 ही हैज द राइट ऑन द प्रोमिसरी नोट, राइट. So one, sir, please give me the give us blessings for tomorrow exam. My blessings are always with you यार. सब लोगों के साथ हैं. मैं चाहता हूँ सब लोग सीए बन जाएं. Point number 2 once again कुछ लोगों का रह गया. That point says if contract is entered during the time of minority cannot be enforced, cannot be confirmed after being the major, because at the time of minority the contract was already void, and void cannot be converted into valid. What was the example? X ने promissory note लिखा Y को at the time of minority, तो contract void हो गया. And after becoming major, he had decided to give another promissory note. But this contract is again void because X is making the promissory note, but what he is getting, there is no consideration. Contract will be void. चलो यहाँ तक हो गया. अभी यहाँ तक 3 तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चे. सेकंड थर्ड मैंने दोबारा समझा दिया. अभी कोई डाउट हो अभी भी तो मुझे बताओ. शगुफ्ता नाजनीन, डिक्री मीन्स ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट. ठीक है ना? सब लोगों का, दिव्या आपकी क्वेरी आ रही थी बहुत सारी, अब क्लियर हो गया बेटा आपको दोनों पॉइंट, सेकंड थर्ड, फिर फोर्थ पे स्टार्ट करें. फोर्थ पॉइंट, a minor can always plead minority and is not stopped to do so even where he has taken any loan or entered
into any contract by falsely representing that he was major. क्या कहा क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, एग्जिट पॉइंट क्या कह रहा है, minor has always right to take the plead. Sir, I am minor, I can't do, I am contract with me is void, please please leave me. माइनर के संग तो एक बेनिफिट दे दिया कि अगर माइनर हो तो वो अपना भरण ले सकता है, सर मैं तो माइनर हूं, माफ कर दो मुझे. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट even that he has falsely representing that he was major. उसने झूठ बोला जो एक्चुअली वाज डन इन केस ऑफ मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष. एक्चुअली डन, he misrepresent that he is major but actually he was minor under the 18. So in case of Mori V versus Dharmdas Ghosh, Mr. D misrepresented his age and money lender has paid rupees 8,000. But the court did not stop him from denying that he is minor and therefore not liable to pay any amount. Clear इतनी बात? बताओ जल्दी बताओ, समझ में आ गया? जो जो माइनर है फायदा उठाओ. नहीं नहीं ये बात मत करना भाई, फालतू में तुम मुझे फंसा दोगे, ऐसा मत करना. इस सर ने कहा था हमसे तो. नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, गलत बात. नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज. दिस इज प्लीड, मतलब उसका बहाना बना सकते हैं. मिस हेनिन कुमारी मिस्त्री इज आस्किंग सर, प्लीड माइनॉरिटी मींस, माइनॉरिटी मतलब इसका रास्ता ले सकते हैं, इसकी दया कर सकते हैं, या कहें हम कि इसका बहाना ले सकते हैं, मैं तो माइनर हूं, मुझे अलाउ करो. ठीक है. बट दिस इज द तलवार, खतरे की घंटी, डेंजर बेल. Minor is liable to pay out of his property. Important thing is out of the property. For necessaries supplied to him by other necessaries may be about necessaries, goods, food, clothes, services, education. देखिए लॉ ये कहता है माइनर्स असेट जो उसके पास प्रॉपर्टी है इज लाइबल फॉर नेसेसरीज टेकन बाय हिम. माइनर ने कोई नेसेसरीज ली है तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी अगर है तो लाइबल है. एंड नेसेसरीज मींस रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, फूड, क्लॉथ, shelter and education. These are necessaries for a minor. So minor has taken these services or these supplies, then he is liable to pay out of his own property. Right? See the example. Shruti being a minor purchase a laptop. अच्छा example है आप लोगों के लिए. Shruti being a minor purchase a laptop for her online classes of rupees 70,000 on credit from a shop. But her asset could pay only 20,000. The shopkeeper could not hold Shruti personally liable and could recover only 20,000. श्रुति ने 70,000 का लैपटॉप खरीदा उधार, माइनर है श्रुति, और पैसे उसके पास जो उसकी असेट है, जो उसका बैंक बैलेंस है, जो उसका कैश बैलेंस, सब मिला के 20,000 रुपए है. तो दुकानदार केवल 20,000 क्लेम कर सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि ये उसने एजुकेशन पर्पज से लिया है, नेसेसरीज लिया है. अब क्वेश्चन विल बी अराइज फ्रॉम योर साइड, सर व्हाट अबाउट 50,000, हु विल पे? नो वन विल पे. है ही नहीं, माँ बाप लाइबल नहीं होते. ठीक है. शगुफ्ता कह रही है सर हम भी बैंक से लोन ले लेते हैं, मिलेगा ही नहीं बच्चे, माइनर को लोन ही नहीं मिलेगा. कैसी बात कर दी आपने. प्रियंका मैंने पॉइंट नंबर 2 रिवाइज कर दिया बेटे, कोई डाउट हो तो दोबारा कुछ बता देता हूँ. पॉइंट नंबर 2 में क्या था, याद है सब लोगों को? माइनर इज नॉट लाइबल. माइनर कैन नॉट confirm the contract which was entered at the time of minority after becoming major. क्या था पॉइंट कि अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मेजर होने के बाद भी उसे कंफर्म नहीं कर सकता. राइट. तो पॉइंट नंबर 5 तक बताओ, क्वेरी हो तो.
Pari is asking, sir, in case of minor have no money or property to pay for necessaries, even he will liable or not? He will not be liable. अरे जब मेरे पास है ही नहीं और मैं माइनर हुआ तो मैं कहां से पे करूंगा? ठीक है सर, लैपटॉप को नहीं ले जा सकता क्या शॉप वाला? दिस इज पॉसिबल, अगर लेकिन लैपटॉप उसने यूज कर लिया, खो दिया, तो नहीं लिया। मिस आकांक्षा शुक्ला सेइंग, सर बच्चों को सिखाना पड़ेगा क्या? क्या चीज सिखाओगे बच्चे मेरे? 5 तक कोई डाउट? 6 we have already discussed. 6 point, minor cannot be entered into partnership, but as per the Indian Partnership Act 1932, the section 30 provides he can be admitted for the benefits only. ठीक है, और a minor is not liable to pay the liability, so there is no question arise about his insolvency. इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? जो लाइबिलिटी सॉल्व नहीं कर पाता है, लाइबिलिटी पे नहीं कर पाता है। हु इज इंसॉल्वेंट? हु कैन नॉट सॉल्व हिज लाइबिलिटीज, हु कैन नॉट पे हिज लाइबिलिटी। तो माइनर, इफ माइनर इज नॉट लाइबल टू पे एनी लाइबिलिटी, हाउ इट कैन बी एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट? जब माइनर कोई लाइबिलिटी नहीं देनी है तो वो इंसॉल्वेंट कहां से होगा? So he cannot be adjusted insolvent because of the incapability of contracting. माइनर कैन नॉट बाइंड हिट पेरेंट्स और गार्जियन, माइनर के पेरेंट्स भी लाइबल नहीं है। माइनर के तो पेरेंट्स भी लाइबल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, अ माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट और गार्जियन इवन फॉर द नेसेसरीज। द पेरेंट्स विल बी हेल्ड लाइबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ। माइनर ने जो भी काम किया उसके लिए पेरेंट्स लाइबल नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चे को एजेंट बना के भेजा हो, अपना अपना एजेंट, यानी चाइल्ड इज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द पेरेंट, देन पेरेंट विल बी लाइबल। सी द एग्जांपल नंबर 6। Richa, a minor, entered into a contract of buying a scooty from the dealer and mentioned that her parents will be liable for the payment of scooty. रिचा ने स्कूटी खरीदा और कहा कि मेरे पेरेंट्स लाइबल होंगे, वो देंगे पैसे तो। द डीलर सेंट ए लेटर टू हर पेरेंट्स फॉर मनी। The parents will not be liable for such payment as contract was entered by minor in the absence and the out of their knowledge. Anusha saying, sir, please mean दुहाई देना? Yes, दुहाई है, दुहाई। Faisal is asking, sir, minor cannot change contract once he is major. If he want to do, then he make a new contract. Yes, there must be a new contract. Akansha saying, sir, फायदा तो minor का ही है, definitely. राजेश कुमार कह रहे हैं, सर लैपटॉप वाला सेल ही नहीं करेगा। देखिए, लैपटॉप वाले को सेल नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया तो फिर क्या हो सकता है? शिवराज सिंह, सर नोट्स शेयर कर दीजिए। बेटा नोट्स में कल शेयर कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, ऐप पर है, आप डाउनलोड करके देखिएगा एक बार। अनिल जी ने क्वेश्चन अच्छा पूछा, देखो इन्होंने तो अपने आप इन्वॉल्व कर लिया, अनिल यादव जी ने। सर, इफ आई एम माइनर टेकिंग लैपटॉप 70,000, वेरी गुड, एंड पेड 20,000, शॉपकीपर इज लायबल टू टेक मनी आफ्टर आई एम बिकम मेजर? नो। उन्होंने पूछा, सर अभी मैं माइनर हूँ और 70,000 का लैपटॉप खरीद लिया, 20,000 दे दिए, तो बचे हुए क्या बाद में ले सकता है जब मैं मेजर हो जाऊंगा? नहीं भाई, नहीं ले सकता, मौज हो गई। अनगा सेइंग, सर थैंक यू सो मच सर, आपका क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। पर अभी ब्रेक की बात मत करना, ब्रेक करेंगे अपन फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद, ठीक है ना? माइनर कैन बी एजेंट बिकॉज माइनर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। माइनर एजेंट हो सकता है क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा, और अल्टीमेट लाइबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल। A minor can be agent on behalf of principal and principal will be liable for the acts of minor.
Minor can act as an agent, but he will not be liable to his principal for the act. अगर वो गलती करता है, if agent do wrong, uh, principal have to pay. Principal cannot claim from the agent. A minor can draw, deliver, endorse negotiable instrument without himself being liable. See example number 7. Then I will repeat this point again. A minor can have an account in the bank. He can draw a check for his purchase, but he shall not be liable for check bounces, nor can he be sued under the court of law for any fraud done from his account. A minor can have, मतलब माइनर का बैंक में अकाउंट सकता है, पर अगर कोई चेक बाउंस होता है उसके अकाउंट से, उसके लायबिल नहीं है. एक तो ये बात हो गई. दूसरी बात क्या थी, जो लाइन लिखी हुई है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन. He will not be liable to his principal for his acts. Suppose I am the principal, I am the major person, I appoint Mr. A as my agent, ठीक है, to sell my property at a minimum value of 2 lakhs. मैंने एक को एजेंट अपॉइंट किया कि मेरी प्रॉपर्टी कम से कम 2 लाख में बेचनी है, सब बता दिया मैंने. बट ही सोल्ड दिस प्रॉपर्टी ओनली फॉर 1,50,000, लेट्स से. इवन I informed him that the minimum price should be 2 lakh, but he sold for 1,50,000 only. Now I cannot claim 50,000 from the agent. मैं एजेंट से 50,000 क्लेम नहीं कर सकता. मैंने एजेंट को बोला था, भाई तू ये प्रॉपर्टी बेच दे, 20,000 से 2 लाख से कम में मत बेचियो. उस भले मानस ने 1.5 लाख में बेच दी, 50,000 नुकसान हो गया मुझे, तो मुझे ही होगा, वो क्लेम नहीं कर सकता एजेंट. राइट. सी द पिक्चर एंड सी द वर्ड्स डाउन द पिक्चर. क्या लिखा हुआ है? फेस, सी द फेस ऑफ द पर्सन while signing a check for wife's jewelry. In case of joint contract in which one person is minor and one adult, so only adult will be liable, minor will not be liable. दो लोग मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक माइनर है एक मेजर है, तो लाइबिलिटी मेजर की होगी, माइनर की लाइबिलिटी नहीं होगी. गारंटर, श्योरिटी for a minor, a contract in a contract of guarantee when an adult stands surety for a minor, then he, that is adult, is liable to third party as a direct contract between the surety and the third party. What does it mean? Suppose Mr. X is minor and I give the guarantee for him, then I will be liable not as a guarantor, as a direct person. सपोज मैंने माइनर की गारंटी दी है, एक एक्स में माइनर की गारंटी दी कि साहब अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा, पर मेरी लाइबिलिटी इसके में सेकेंडरी नहीं होगी. इसमें लाइबिलिटी क्या होगी? मेरी प्राइमरी लाइबिलिटी होगी, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा एज डायरेक्ट लाइबल पर्सन. मैं गारंटर नहीं बचा, यानी कि थर्ड पार्टी डायरेक्ट मुझसे पैसा मांग सकती है. सी द एग्जांपल नंबर 8. मिस्टर एक्स गारंटेड फॉर द परचेज ऑफ ए मोबाइल फोन बाय क्रिश, अ माइनर. In case of failure for payment by Krish, Mr. X will be liable to make the payment. ठीक है. Minor may be shareholder by transferring. See, this point is important. A practical question can be asked on this point. A minor being incompetent to contract cannot be shareholder of the company. If by mistake he becomes a member, the company can resign the transaction and remove his name from the register. But a minor may, acting though his lawful guardian, become a shareholder by transfer or transmission of fully paid shares to him. क्या कहा इसमें? Minor shareholder नहीं हो सकता, company cannot allot shares to him. If by mistake it was done, the company has to cancel the contract, remove the name of minor from the book, from the register of members. But share can be transferred, fully paid shares can be transferred to the minor. Suppose minor, एक कंपनी है, लेट्स से कंपनी में ABC एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,
ABC and Private Limited, and in that company, Mr. M minor apply for share. Company cannot allot him. But see, my son is minor. I can transfer his share in his name if shares are fully paid up. देखिए कंपनी डाट अलाउट नहीं कर सकती, शेयर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरा बेटा है, वो माइनर है और शेयर्स मेरे पास है, वो फुली पेड अप है, तो मैं उसको शेयर उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ फुली पेड के रूप में, क्योंकि उसकी लायबिलिटी नहीं बची। If the shares are fully paid up, then there is no additional liability on the shareholder. So fully paid up shares can be transferred to the minor. Liability for torts, civil wrongs. C. A minor was held liable for his failure to return certain instrument which he had hired and then passed on to the Fed. जो सिविल रॉन्ग्स हैं, छोटे मोटे गड़बड़ हैं, जैसे कि माइनर को मैंने बुक दी और बुक उसने किसी और को दे दी, तो मैं बुक क्लेम नहीं कर सकता, माइनर कोई लॉस क्लेम नहीं कर सकता, राइट। यहाँ तक तो ये टॉपिक खत्म हुआ माइनर का। बट इससे पहले मैं आप लोगों की क्वेरी ले लूं जो बची हैं, फिर अपन अनसाउंड माइंड पे आएंगे। ब्रेक तो मिलेगा आपको माइनर खत्म, ये कैपेसिटी खत्म होने के बाद, तो प्लीज वेट। आज के लिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वेट, ब्रेक में दूंगा पर थोड़ा पार्ट हो जाने दो। इतनी बात तो मेरी मान लोगे आप लोग। माइनर बीइंग एन एजेंट ऑफ पेरेंट्स। देखिए मैं अपने बेटे को भेजता हूँ किसी दुकान पर कि बेटा ऐसा करो मेरे लिए एक चॉकलेट ले आओ, और वो दो लिया है, एक खुद खा ली उसने, तो फिर लाइबिलिटी मेरी है, बेटे की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। शिवा तो कह रहे हैं सर मैं तो लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, वेरी गुड, जाओ। फैजुल फैजुल कह रहे हैं सर लैपटॉप भी तो असेट है, क्या वो ले आ सकता है? डेफिनेटली अगर लैपटॉप है तो वापस ले आ सकता है दुकानदार। मिस लीजर रानी बिस्वाल इज सेइंग सर अगर लैपटॉप एजुकेशन पर्पज से नहीं लिया गया है तो क्या शॉपकीपर क्लेम कर सकता है? वो वापस क्लेम तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वॉइड हो गया, फिर तो क्लेम ही नहीं कर सकता अगर एजुकेशन पर्पज से नहीं है तो। अगर लैपटॉप उसने एजुकेशन पर्पज से नहीं खरीदा है तो फिर दुकानदार एक रुपया भी क्लेम नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। Mahesh is asking, sir, if minor buys something and he knows about the law, tries to escape from the liability, will he be liable to for goods as purchase? देखिए आपने क्वेश्चन ये है कि अगर लॉ मालूम है माइनर ने गड़बड़ करी है, तो देखिए जो कॉन्टेक्ट कर रहा है माइनर से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माइनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज पर द लॉ। सर अगर माइनर फ्रॉड कर रहा है तो कोर्ट डिस्क्वालीफाई करेगा। देखिए लॉ ने साफ कह दिया अगर माइनर अपनी बात छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैं मेजर हूं, तब भी कोई लाइबिलिटी नहीं है उसके ऊपर। Sir, if a minor kid sell his parents' car to a major at lower price, देखिए डिपेंड करता है। आपका क्वेश्चन ये है कि माइनर ने अपने फादर की कार ही बेच दी, ये सब अथॉरिटी नहीं है, ही कैन नॉट सेल। अगर उसने बेच, जिसने कॉन्टेक्ट किया है वो लाइबल होगा, लेकिन आपने पेरेंट्स को अथॉरिटी दी है तो ही कैन सेल। बाइंड्स मीन उसको बांधना, कॉन्ट्रैक्ट में बांधना। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट मतलब है बच्चे की सिविल रॉन्ग्स, जैसे कि आपने, आई हैव गिवन द सम बुक टू माइनर एंड ही हैज passed on without my authority, I cannot claim from the minor। बेटा सर ब्रेक, अरे शिवा तुम लैपटॉप बाद में ले लियो बेटा, ब्रेक रुक जा, अभी लैपटॉप बाद में लियो, क्योंकि मुझे खत्म करना है बच्चों ये टॉपिक आज, बिगर उसके मजा नहीं आएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे आप। सर माइनर के ऊपर सूट फाइल हो सकता है क्या? नहीं। नाउ पर्सन ऑफ साउंड माइंड,
हु इज साउंड माइंड, सेक्शन 12 says, अब साउंड में मतलब जिसके दिमाग में साउंड जाए। अनसाउंड कौन? हम कुछ भी कहते रहे उसके दिमाग में साउंड ही नहीं जा रहा। द अनसाउंड माइंड मीन्स द पर्सन इज नॉट गेटिंग साउंड व्हाट वी आर सेइंग। अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon interest। मतलब इस साउंड माइंड का मतलब है कि वो आदमी जो बात सुने और समझ सके क्या है बात, मतलब क्या है उसका। इन फैक्ट अनसाउंड माइंड पर्सन हु इज नॉट गेटिंग द साउंड। तो अगर मैं इन सिंपल लैंग्वेज कहूं, अनसाउंड माइंड इज मैड पर्सन, पागल आदमी। और आज लॉ बताएगा हमें कि दे आर थ्री टाइप्स ऑफ मैड पर्सन। थ्री: इडियट, lunatic and intoxicant। इडियट, lunatic and intoxicant। इडियट मतलब वो आदमी जो पूरी तरह से पागल हो, जो आप एक दूसरे को एड्रेस करते हो, इडियट। एन इडियट इज ए पर्सन हु इज कंप्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल पावर, पूरी तरह से पागल हो। द कॉन्टेक्ट विद दिस पर्सन इज वॉइड। lunatic means the person who is mostly unsound but sometime he is sound। Lunatic means the person who is mostly unsound but sometime he is sound mind। अगर बात करें मैक्सिमम टाइम वो पागल रहता है, कभी कभी सही हो जाता है। A person who is usually of unsound mind, maximum time he is unsound mind but occasionally of sound mind, may make a contract when he is of sound mind। वो उस समय कॉन्टेक्ट कर सकता है जिस समय वो साउंड माइंड, राइट। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, burden of proof। In this case, in case of contract with lunatic, listen carefully. In case of contract with lunatic, as lunatic is a person who is mostly unsound mind, the court will presume, the court will presume that contract was entered at the time when he is of unsound mind। ल्यूनेटिक पर्सन जो मैक्सिमम टाइम पागल रहता है, तो कोर्ट भी ये मानेगा, क्या मानेगा कोर्ट भी, कि कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त हुआ जिस समय ये अनसाउंड माइंड था, राइट। इन सो द कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस विल बी वॉइड एज पर द कोर्ट, but some person says no, the contract was entered at the time when this person is of sound mind, he has to prove। यूनिटी के केस में कोर्ट ये मानेगा कि कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त हुआ जिस वक्त ये पागल था और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन वो कहता है सर नहीं, मैं उस समय सही था, तो ही हैज टू प्रूव द बर्डन ऑफ प्रूविंग ऑफ साउंड माइंड। क्या प्रूव करना है? व्हाट टू प्रूव? दैट पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड। द बर्डन ऑफ प्रूविंग ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट lies on the person who confirm it, who affirms it। आपको प्रूव करना है कि कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त हुआ जिस समय वो साउंड माइंड था। इट मींस with idiot contract is void, with lunatic court presume it as void, but you can prove that contract was entered at the time when you are sound mind, then contract will be valid। क्या कहा मैंने? idiot के केस में contract void होगा, lunatic के केस में क्या होगा? कोर्ट तो void मानेगा। आपको प्रूव करना है कि कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त हुआ जिस समय पार्टी साउंड माइंड थी, राइट। कोई डाउट यहां तक? थर्ड पॉइंट, इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट ऑन ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन पर्सन हिंदी में बोलते हैं नशेड़ी। लॉ सेज a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound। क्या मतलब? नॉर्मली सही रहता है पर कुछ ले लेता है ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। Now he is maximum time is of sound mind। In maximum time he is of sound mind, the court will presume
the contract is valid. The court will presume the contract is valid. So if person says, sir, at the time of making the contract, I am not able to understand the facts of the case, he has to prove. Burden of proof of proving the sound mind. Please correct it. It is not sound mind, it is unsound mind. इसको correct कर लीजिए, printing error है ये मेरी, typing error हो गई है. Proving of unsound mind. Please correct it. Proving of unsound mind at the time of contract lies on the person who denies it. Please correct कर लीजिए इसको, copy paste हो गया है. The burden of proving of unsound mind at the time of contract lies on the person who denies it. Who denies it यानी कि जो कहता है सर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, तो आप प्रूफ करो ना उस समय जो पर्सन था वो इंटॉक्सिकेंट था, राइट. Sir, I am Kishan, a minor, and my parents knows all the legal laws about a minor. Then why he or she make take me to any contract or outsiders? खतरनाक बात कर रहे हो आप बच्चे. ये तो आप उनसे पूछो एक बार पेरेंट्स से. सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑल सेक्शन लिस्ट की पीडीएफ है सर. आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्ट डाउनलोड कीजिए गूगल पे से, तो पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, सेक्शन लिस्ट मिल जाएगी. सर क्या हम बोल सकते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय लूनेटिक एंड इंटॉक्सिकेंट और वॉइडेबल? नो, वॉइडेबल नहीं है. वॉइडेबल तो नहीं कह सकते नॉर्मल केस. ठीक है. वॉइडेबल तो जब होता है जब फ्री कंसेंट नहीं, वो डिस्कस करेंगे, कुछ आज करेंगे कुछ कल करेंगे, राइट. Now the last topic of this chapter, contract by disqualified persons. So law has mentioned some person who are disqualified to enter into the contract. Alien enemy. Alien enemy means the person, the citizen of a foreign country which is at war with India. जो अगर इंडिया से कोई दुश्मनी चल रही है, किसी देश की लड़ाई चल रही है, तो उसका जो सिटीजन होगा वो एलियन एनिमी कहलाएगा. At present there is no country with war at no country is with war with India. किसी देश की लड़ाई नहीं चल रही इंडिया के साथ. But this says if a contract is made during the war, it is void. Contract war के टाइम पे होगा, void होगा. But contract was entered before the war and war occurred after the contract. The contract will be at suspended or at stay. ठीक है. After the war, it will be revived. But if government thinks, court thinks that to continue to revive the contract is harmful for the country, it will be void. क्या मतलब है कि दुश्मन देश के नागरिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होता है, void होता है. हिंदुस्तान का कोई अभी दुश्मन देश नहीं है, ठीक है. अगर वॉर के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो void होगा. लेकिन अगर वॉर से पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वॉर से पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाएगा, स्टे लग जाएगा और वॉर खत्म होने के बाद रिवाइव हो जाएगा. लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि रिवाइव करने से देश को हानि होगी, देश को नुकसान होगा, तो इसे परमानेंटली सस्पेंड कर सकते. सेकंड पॉइंट आता है फॉरेन रूलर्स. रूलर्स मतलब फॉरेन किंग्स. उनके संग कॉन्ट्रैक्ट करना हमारे लिए कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कोर्ट में बुलाने के लिए एनफोर्स नहीं कर सकते. They can enter into the contract and enforce those contracts in our courts. But an Indian citizen has to obtain a prior sanction of the central government in order to sue them in our law. But an ex-king can, however, be sued against the court without any such sanction. अगर कोई देश का राजा है, उसके संग आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी. सेकंड थिंग, अगर वो एक्स किंग है, इट मींस वो पहले राजा था अब नहीं है, तो वो एक नॉर्मल इंसान है, उसके संग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते. ठीक है. Corporations means companies. Actually, companies have their own bylaws in the form of memorandum of association and article of association, company law.
So they have to follow according to it. For example, I'm taking just one example before you. Suppose in the memorandum it was mentioned, suppose in the memorandum of a company, it was mentioned the company will do the business of selling of fruits only, not vegetables. मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कंपनी केवल और केवल फ्रूट्स बेचने का काम करेगी, सब्जी वेजिटेबल्स नहीं बेचेगी. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज any person can sell the fruits or vegetables. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो आप वेजिटेबल बेच सकते हैं, पर कॉर्पोरेशन कंपनी ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया अपने बाई लॉज में, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी, यानी कि कॉर्पोरेशन इन कंपनी in which memorandum it was mentioned that company can do the business of fruits only, it cannot do any other. Insolvent, the person uh, who has no money to solve his liability, who has no asset to solve his liability, जब उसको पहले ही नहीं चुका पाया तो वो आगे भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता. कन्विक्ट्स, अपराधी, जब तक वो अपराधी है, जेल में है, तब तक वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता. अ कन्विक्ट है when undergoing imprisonment is incapable of entering into the. So this was the summary for the first chapter. Time for super over 1, but before it, taking your queries. सर माइनर एज शेयर होल्डर, देखिए मैंने बोला बेटे माइनर को कंपनी डायरेक्ट अलाउड नहीं कर सकती बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियली, बट if shares are fully paid up and transferred in favor of minor, it is valid. शेयर फुली पेड अप है, माइनर को ट्रांसफर किए जा रहे हैं किसी और के द्वारा, तो वैलिड. What is the burden of proof? Burden of proof means who has to prove. देखिए, in case of idiot, the contract is void. In case of lunatic, court will presume that contract is void. The person who says the contract is valid, he has to prove that contract was entered at the time when the person is of sound mind. In case of contract with intoxicant person, the contract will be valid. Now, person who denying the contract, he has to prove that contract is void and entered at the time when the person is of sound mind, is of unsound mind. सर अगर देखिए अनिल यादव कह रहे थे बुक्स में किधर लिखा हुआ है डिस्क्वालिफाइड, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, अब देखो है उसमें. आकांक्षा सेइंग सर अगर हम ड्यूरिंग वॉर एग्रीमेंट करते हैं और पेमेंट ना करें तो क्या केस फाइल होगा? देखिए ड्यूरिंग द वॉर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड होगा, फिर आप क्लेम ही नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, हाउ फॉर एनफोर्सेबल? शगुफ्ता, देखिए गार्जियन इफ डूइंग कॉन्ट्रैक्ट, देख फर्स्ट थिंग, contract by entered by minor, no guardian will be liable for that. If guardian are entering a contract through minor, minor is working as an agent, then guardians are liable. सर अगर फॉरेन सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं तो चलता है ना? हाँ, दे आर एग्री, दे आर कंफर्टेबल, दे कैन डू. सर कॉर्पोरेशन वाला समझा दीजिए. आई हैव डिस्कस बेटे, कॉर्पोरेशन हैव ओन लॉस, दे आर नॉट बाउंड विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अगर उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन है तो वो एप्लीकेबल होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. इफ पर्सन कम्स आउट ऑफ द जेल ऑन बेल, नो, नॉर्मली ही कैन डू कॉन्ट्रैक्ट. सर आई मिस इंसॉल्वेंट पॉइंट. देखिए इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट बताया था, इंसॉल्वेंट इज ऑलरेडी नॉट एबल टू सॉल्व द लायबिलिटी, सो नो अदर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डन बाय हिम. सर अगर अनसाउंड माइंड प्रूफ ना कर सकें तो बात ही खत्म हो गई बच्चे, फिर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टेटस वही माना जाएगा. सर आईसीआई चलाता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक एग्जाम में? भैया चेक होंगी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी, ध्यान से करना है. चलिए
सुपर ओवर 1, इसके बाद हम ब्रेक रखेंगे 5 मिनट का, फिर 2 पॉइंट करेंगे फ्री कंसेंट के, ठीक है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ majority, minority, sound reputation, sound financial position. A drunken or intoxicant person is not competent to contract as he falls in the category of person disqualified by law. Person of unsound mind discarded by society, enemies of society. On attaining the age of majority, an agreement entered into during his minority becomes voidable, becomes valid, can be ratified by him, cannot be ratified by him. A minor can be declared as insolvent, cannot be declared as insolvent, can be declared insolvent for limited purpose, is regarded as insolvent under law. A contract made by an idiot is valid, void, voidable, illegal. A person below is minor for the purpose of entering into contract, 15 years, 17 years, 18 years, 21 years. A query from Miss Padma Charita, sir. So foreign sovereigns cannot contract with Indian citizen, either he is in power or not in power. They can do the contract, but unko they will be called in the court. This will be decided by the central government. उनके संग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पर उन्हें कोर्ट में बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड, राइट। सो कम टू द आंसर्स. Every person is competent to contract who is the age of majority. A drunken or intoxicated person is not competent to contract as he falls in the category of unsound mind. On attaining the age of majority, cannot be ratified. A minor cannot be declared as insolvent. A contract made by an idiot is void. A person below the age of 18. First person who has given all the correct answer is Miss Nishi Garg. Congratulations, Nishi. Second one is Miss Lisa Rani Biswal. Congratulations, bache. Third one is Miss Rani Prasad. Congratulations. Fourth one is Mr. Surya Patra. Congratulations, bache. And fifth person is Miss Muskan Pandey. Congratulations once again, all of you. And at this place, we are taking a break of 5 minutes only. 5 मिनट का ब्रेक रहेंगे, ज्यादा नहीं. विनू जी, आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? विनू जी, 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए बच्चों को. ठीक है बच्चों, हमारे टेक्निकल स्टाफ अभी शायद कहीं है नहीं. जब तक आप ब्रेक ले लो 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट का ज्वाइन करते हैं.
Okay, sir. Now come to part 2 of this unit, that is free consent. So today we will discuss 2 points of this concept, coercion and undue influence, right? Shagufta is asking, sir, a contract without consideration under section 25. Yes, beta. First of all, uh, before discussing the concept free concept, we have to understand the concept consent. Section 13 of Indian Contract Act provides the provisions regarding consent. Consent means two or more persons are said to consent when they are agree upon the same thing in the same sense. Okay, Anaga, I will definitely take your problem, but मैं भूल गया आपकी बात. I will take your problem before ending the class today. So please wait. I will definitely take your query. Two or more persons are said to consent. Please underline when they agree upon same thing in the same sense. So what does it mean? See, I have there are two pictures before you. Both are plant. First is natural plant, second is plant and machinery. I am entering a contract with Mr. X for purchasing a plant. I am thinking that I am talking about plant and machinery, and he is thinking that I am talking about natural plant. So there is no consent because we both are not agree on the same thing in the same sense. So there is no consent, there is no contract. And this is called consensus ad idem. Consensus ad idem. लोग नॉर्मली कहते हैं ना कंसेंसस नहीं बनी. कंसेंसस मतलब कि उसकी कंसेंट नहीं बनी. सेक्शन 14 provides free consent. So law says consent is said to be free. Said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Coercion defined section 15, undue influence 16, fraud 17, misrepresentation 18, mistake 20, 21, 22. Today we will discuss section 15 and section 16. Today we will discuss section 15 and section 16. ठीक है, एक मिनट रुकिए. Coercion. Please note the meaning of coercion. Coercion means, अगर हिंदी में बात करें, उत्पीड़न. In English, it is physical torture. Physical torture. Physical torture. See what section says. The consent is said to be caused by coercion when it is consent is obtained by committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code. Indian Penal Code. Actually, Indian Penal Code defines the acts which are considered as crime. इंडियन पेनल कोड में वो एक्ट डिफाइंड है जो क्राइम कहलाते हैं. तो लॉ ने कहा इफ द कंसेंट इज कॉज्ड इज टेकन बाय on the basis of commit or threatening any crime which is mentioned in Indian Penal Code.
कि अगर कंसेंट कुछ ऐसी बात या ऐसे एक्ट के साथ ली गई है, उसको दिखा के डरा के, जो इंडियन पिनल कोड में क्राइम कहलाती है, तो कंसेंट फ्री नहीं है। एंड बी पॉइंट, अनलॉफुल डिटेनिंग, डिटेन मीन्स कब्जा करना, होल्ड करना, डिटेन मीन्स होल्ड करना, कब्जा करना, और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, उसकी धमकी देना। सीधा एग्जाम्पल नंबर 8, एक्स सेज टू वाई, आई शैल किल योर सन unless you agree to sell your house to me for rupees 5,000। क्या कहा उसने, एक्स ने वाई से, कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा अगर तुमने अपना घर 5,000 में नहीं दिया। वाई सेज, ऑल राइट सर, आई शैल सेल माई हाउस टू यू फॉर रुपीज 5,000 बट डू नॉट किल माई सन। नाउ एक्स हैज एम्प्लॉयड कोर्शन, फिजिकल टॉर्चर। Example number 8 is connected with point number A above, and example number 9 is connected with point number B above. See, X says to Y, I shall not return the document, shall not return the document of title relating to your wife's property unless you agree to sell your house to me for 5,000 rupees. मैं आपकी पत्नी के घर के कागज, प्रॉपर्टी के कागज आपको वापस नहीं करूंगा अगर आपने मुझे अपना घर 5,000 रुपए में नहीं बेचा। अगर आपने अपना घर 5,000 में नहीं बेचा, तो मैं अब जो पेपर्स हैं आपकी वाइफ की प्रॉपर्टी की जो मेरे पास हैं, वो मैं आपको नहीं दूंगा। आई शैल नॉट रिटर्न द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ओनरशिप, document of ownership relating to your wife's property unless you agree to sell your house to me for rupees 5,000। Y says, okay, all right, sir, I shall sell my house to you for rupees 5,000. Please do not detain my wife's document of title. Now X has employed coercion. X ने क्या किया, coercion अप्लाई किया। यहां तक कोई डाउट इस पॉइंट पर, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछिए। Consequences of coercion. Section 19 says about coercion, consequences of coercion. What it says, contract is voidable at the option of the party whose consent was so caused. So in example number 8 and 9, the contract is voidable at the option of Y, because Y consent is taken by applying the coercion. ठीक है, क्लियर इतनी बात। नाउ सेकंड पॉइंट इज, person to whom money is paid or thing delivered under coercion must repay or return it. Person to whom money is paid or things delivered under coercion must repay or return it. See, in example number 8, X has applied coercion, Y contract is voidable at the option of the Y. Y has filed the case, the contract is voidable. So Y can recover the house from X. Now Y, if has taken rupees 5,000 from X, he has to return it. क्या कहा बी पॉइंट में, कि अगर आपने कोई बेनिफिट लिया है इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में और आप वॉइड कर रहे हो, तो वापस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपने 5,000 रुपए लिए हैं और घर वापस ले रहे हो, तो 5,000 वापस करो, क्लियर इतनी बात। ना बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन प्रूफ करेगा, हु विल प्रूव दैट देयर वाज अ कोर्शन, मिस्टर वाई हैज टू प्रूव दैट देयर वाज कोर्शन अप्लाइड ऑन मी, लाइज ऑन एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड मींस प्रताड़ित पार्टी, प्रताड़ित मींस with whom coercion is done, coercion was applied, that his consent is not free। ठीक है, Miss Rani Prasad is asking, if X is not paying any consideration, then is it void? अगर कंसिडरेशन नहीं है, जीरो में दिया तो void हो गया, सही बात है। अब एक अच्छी सी बात, threat to commit suicide, is it coercion?
देखो भैया, सुन लो मेरी बात ध्यान से। सुसाइड इज ओनली क्राइम if successfully committed, there is no punishment. If you committed but not get successful, then punishment is there. अकेला ऐसा क्राइम है जो आपने कर लिया सक्सेसफुली तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और अगर अटेम्प्ट किया और रह गए तो फिर सजा है। थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज कोर्शन. सुसाइड इज forbidden by Indian Penal Code IPC. Is obvious reason not punishable. A dead person cannot be punished, but Section 15 says that committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code is coercion. तो लॉ ने तो कहा है कि अगर आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया या धमकी दी जो आईपीसी में मेंशन है तो वो कोर्शन माना जाएगा. तो देयरफॉर थ्रेट टू कमिट सुसाइड विल बी रिगार्डेड एज कोर्शन. Regarded as coercion. If service is done under coercion, then how repayment of service is done? एक क्वेश्चन आया इनका मिस जयलक्ष्मी जी का कि सर इफ सर्विस इज डन अंडर कोर्शन देन हाउ रीपेमेंट ऑफ सर्विस इज डन. देन जो नेचुरल वैल्यू इफ देन नेचुरल वैल्यू ऑफ दिस सर्विस विल बी पेड. भाई जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई टीचिंग कॉस्ट इज ₹10,000 and someone has given the target the gun at me to please teach me at ₹1,000 and I taught. After that I am filing the case. In that case I can claim only the जो मेरी natural fees है वो claim कर सकता हूँ, contract void नहीं हो सकता क्योंकि service has been already taken, right? See the example where husband obtained a gift deed from his wife and son under a threat of committing suicide. The transaction was set aside. Set aside means cancel. Set aside means cancel on the ground of coercion, suicide being forbidden by Indian Penal Code. ठीक है. Undue influence. Please जो हिंदी वाले नोट कर लें. Undue influence means अनुचित प्रभाव. Section 16. अनुचित प्रभाव. कोर्शन में कोई डाउट किसी को? The burden of proof in coercion is on that person who says there is coercion applied on me. जिसके साथ कोर्शन हुआ है उसे ही प्रूव करना है कि कोर्शन हुआ. राइट रिद्धि? Now undue influence. In coercion there is physical torture. In undue influence there is mental torture. Mental. A contract is said to be induced. Induced मतलब फुसलाना. Induced मतलब फुसलाना. Induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in position to dominate the will of other. Will means इच्छा, and uses that position to obtain an unfair advantage of the other. क्या कहा इसमें? सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 कहता है कि आपके जब दो लोगों में ऐसा रिश्ता है, when two parties are in position, one party can take the benefit, can dominate the other person and takes the unfair benefit of this position, then there is undue influence. कहता है ऐसा रिश्ता हो दो पार्टियों के बीच में कि एक दूसरे को डोमिनेट कर सकता हो और एंड इसका वो फायदा उठाए अनफेयर एडवांटेज के लिए. ठीक है. सी. So what are the essential elements for undue influence? There must be relationship between the parties. A person can be influenced by the other person when a near relations between two exist.
there must be a relationship. Second thing, the relationship in such a nature that one party is in position to dominate the will of other. The relationship between the parties exists in such a manner that one of them is in position to dominate the will of other. A person is said, is deemed to be in such position, the following cases, circumstances: real and upfront authority, real and upfront authority, master and servant, master in position to dominate the will of servant, doctor and patient, doctor is in position to dominate the will of patient. Fiduciary relationship, fiduciary relationship means please mark कर लीजिए, relationship of trust और belief, विश्वास का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता, like father and son, husband wife, solicitor and client, solicitor means advocate and client. मेंटल डिस्ट्रेस, दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर है, वेयर द मेंटल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इज टेम्परेली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय द पर्सन बाय रीजन ऑफ मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, इलनेस और ओल्ड एज। कहता है आपका दिमाग काम नहीं करता, कहीं दिक्कत आती है ड्यू टू एज, ड्यू टू बीमारी, कोई इलनेस है आपको, इस वजह से। तो ये तीन है जहां पर एक पार्टी दूसरे को डोमिनेट कर सकती है। And the third point, the object must be to take undue advantage, unfair advantage. If you are in position to take the to dominate the will, but you are not taking the unfair advantage, there is no undue influence. आप डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप इस पोजीशन में नहीं है कि डोमिनेट करें, या आप बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। आप डोमिनेट कर सकते हैं, आप कोई बेनिफिट नहीं ले रहे हैं अनफेयर, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाए। आप डोमिनेट कर सकते हैं, यू आर इन पोजीशन टू डोमिनेट, but you are not taking the undue advantage, there is no undue influence. Where the person is in position to influence the will of other in getting consent, must have the object to take advantage of it. See the example. A advanced money to his son B during his minority. Upon B's coming of the age, obtains by misuse of the parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance. A employs undue. क्या कहा कि ए ने कुछ पैसा अपने बेटे को लोन दिया जब वो माइनर था, बाद में उससे कुछ बॉन्ड भरवा लिया कि तुम मुझे ये पैसा दोगे, वॉटएवर, अपने अपने पैतृक अधिकार का फायदा उठाते हुए। तो क्या कहा जाएगा, देयर इज undue influence. One more example, an illiterate old woman who is physically ill and mentally distressed executed a gift deed in favor of his relative who was taking care of her. Her relative in position to dominate the will of old woman. क्या है, एक वृद्ध महिला है, बीमार है और कोई रिश्तेदार से सेवा करता है, तो उसी बात मानती है वो लेडी, तो ये माना जाएगा कि वो जो सेवा कर रहा है, he or she is in position to dominate the will of old lady, right? What are the consequences of undue influence? Section 19 capital A. Contract is voidable at the option of the party whose consent was so caused. यानी कि contract voidable है उसके option पर जिसकी consent हमने undue influence से ली है. Second, such contract may be set aside, cancelled, cancel हो जाएगा, or if party who is entitled to avoid it receives some benefit upon such terms and conditions as the court may seem just and equitable. अगर पार्टी ने जिसके साथ कोर्शन जो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है उसने कुछ बेनिफिट लिया है, तो कोर्ट फिर उस कोर्ट डिसाइड करेगी उसमें क्या डिसीजन होगा। अगेन बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी पे होगा जो ये कहता है कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन who said there is undue influence with him. So what law says? The burden of proving
the absence of use of dominant position to obtain the unfair advantage will lie on the party who is in position to dominate the will of others. ठीक है, पहला पहला पहले किसके ऊपर आएगा कि भाई आप फर्स्ट इज ऑन द पर्सन हु सेज देयर इज अनड्यू इन्फ्लुएंस अपॉन हिम, एंड देन the person who want to save himself or herself, he or she has to prove there that he has not taken any unfair advantage of the position. यानी कि पहले तो जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ उसे प्रूव करना है सब मेरे संग धोखा हुआ। अब जब वो आ जाएगी बात तो तुम्हें प्रूव करना है कि तुमने कोई फायदा नहीं उठाया अपनी पोजीशन। द डिफरेंस बिटवीन कोर्शन एंड इन्फ्लुएंस ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेरी क्या है आपकी? सर एग्जाम्पल अगेन मनीष, विच एग्जाम्पल मनीष? सुसाइड वाला के देखिए इसमें क्या है, हस्बैंड ने एक गिफ्ट डीड साइन करा ली अपने वाइफ और बेटे से धमकी देके कि मैं सुसाइड कर लूंगा। हस्बैंड obtained a gift deed from his wife and son on the threat of suicide. ठीक है, now this is the contract clear case of coercion. ठीक है, now what is mean by forbidden? Forbidden, prohibited. Forbidden means prohibited. Now one more thing from Miss Lisa Rani Biswal, she asked me, सर कॉन्सिक्वेंसेज थोड़ा सा समझ नहीं आया। ओके, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, क्लियर कट। सेकंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेट असाइड। सेट असाइड मींस कैंसिल कर दिया जाएगा आइदर एब्सोल्युटली बाय द कोर्ट, और इफ पार्टी विद whom undue influence has been done has received any benefit, then consequence will be decided by the court. क्या कहा मैंने? पहली चीज तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा तो पूरी तरह की तरीके से, लेकिन अगर कोई बेनिफिट लिया है पार्टी ने तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी उसकी कैलकुलेशन कैसे। ठीक है, पूछिए और। सर कॉन्सिक्वेंसेज मेंशन नहीं है बेटा, बुक में है, देखो आप, है, मुझे पता ये है। इफ द पर्सन हु इज मेंटली इल, हाउ ही कैन प्रूव दैट हिज कंसेंट इज टेकन बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस? देखिए अगर वो इल था, मेंटली बाद में सही हो गया तब बताएगा वो। ये देखिए again I am taking with you, we are here to discuss what is the law and the applicability law is based on the evidence. ठीक है, तो ये तो एविडेंस पर है, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या कर सकता है लॉ, क्या नहीं करना चाहिए। रिद्धि अब क्लियर हुआ बेटा आपको सेकंड पॉइंट कॉन्सिक्वेंस का? प्लीज टेल मी। ओके, सो टाइम फॉर सुपर ओवर 2, बट उससे पहले एक क्वेरी थी, एक बच्ची थी, क्या नाम था उसका, अनगा। अनगा क्वेरी थी सर, लास्ट सुपर ओवर थर्ड क्वेश्चन राहुल एंड चमन। एक्चुअली सुपर ओवर में थर्ड क्वेश्चन क्या था, मैं पढ़ रहा हूं उसे। द राहुल इज indebted to Samir. He sells a trolley to Chaman. Chaman promises Rahul to pay all his debt to Samir. If Chaman fails to pay, Samir has no right to sue the Chaman. देखिए राहुल ने कोई लोन लिया समीर से और उसने अपनी कोई ट्रॉली चमन को बेच दी, और चमन ने प्रॉमिस किया राहुल से कि भाई मैं तेरा लोन चुका दूंगा, लेकिन चमन ने नहीं किया। तो क्या समीर चमन से क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो। समीर कैन क्लेम ओनली फ्रॉम द राहुल। तो ये तो हो गया फैक्ट्स। अब क्वेरी क्या थी बिटिया की हमारी की? क्वेरी ये थी, कैन राहुल सू चमन? राहुल चमन पे सूट फाइल कर सकता है? राहुल चमन पे कर सकता है। ठीक है, ओके।
Unconscious bargain means un, un, un कहते हैं उसको अनफेयर ट्रांजेक्शन, उनको बोलते हैं अनफेयर ट्रांजेक्शन। ठीक है बच्चे। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मींस बेटा रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। जैसे पिता बाप बेटे की रिलेशनशिप होती है, मतलब बच्चों की पिता से पेरेंट्स से रिलेशनशिप होती है, वो विश्वास के सौदे होते हैं, डॉक्टर पेशेंट के विश्वास के सौदे। ठीक है। अनकॉन्शनल बार्गेन्स मींस बच्चे मैंने बताया आपको कि अन रीजनेबल ट्रांजेक्शंस उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सुपर ओवर टू। फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। द टर्म कंसेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 12, 13, 14, 15। Next question. A threatens to kill B if he does not sell his scooter to him for rupees 1000 only. Here's B's consent is obtained by undue influence, coercion, fraud, none of these. Undue influence is kind of mental coercion, physical coercion, both of these, none of these. The fiduciary relationship means relationship of trust and confidence, senior and junior, none of these, both of these. Threat to commit suicide amounts to undue influence, coercion, fraud, misrepresentation. To undue influence some sort of relationship between parties, necessary, not necessary, identified, presumed. भेजिए आंसर बच्चों। आ गए आप लोगों के आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। Consent is defined in section number 13. It is the matter of coercion. Undue influence is a kind of mental coercion. The fiduciary relationship means relationship of trust and confidence. Threat to commit suicide is a matter of coercion. Undue influence some sort of relationship is necessary. First person who has given all the correct answer is Miss Nishi Garg. Congratulations, bete.
Second one is Mr. Himanshu Sharma. Congratulations बच्चे. Miss Rani Prasad. Congratulations. Miss Sana Jamadar. Congratulations बच्चे. And Mr. Pavan. Congratulations. Riddhi is saying, sir, in fourth question, senior and junior have also some kind of fiduciary relationship. नहीं, ये तो नहीं कह सकते इसको लॉ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया मेरे हिसाब से तो. ठीक है, और क्या डाउट है? Undue influence is a kind of mental coercion ही है बेटे शगुफ्ता. और कोई डाउट? So this was from my side for today's session. Hopefully you have enjoyed the lecture and please इसको रिवीजन करिएगा. बगैर रिवीजन के नहीं होगा. आप आज ही इसको रिवीजन कीजिए. In next class we will have the test on the first part, that is the capacity to enter into the contract, and after that we will complete this unit. Okay, so all the best to all of you and thank you so much from my side. Thank you everyone.